तो आप सभी का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आशुतोष व्यास N95 मास्क के साथ, और मेरे साथ है लॉर्ड राजानी और वत्सल वोरा बिना मास्क के, क्योंकि वो लोग शायद अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आपके द्वारा भेजी गई हजारों क्वेरीज में से कुछ गिनी चुनी क्वेरीज, हमारे जो लकी फैंस हैं उन्होंने जो भेजा है उसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, आप शायद आगे सुने ना सुने, लाइफ इज वेरी प्रेशियस। हम सभी लोगों को पता नहीं होता एक नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। और जिस तरह से क्लॉप ने अपनी माताजी और एलिसन ने अपने पिताजी को गंवा दिया है ये कोरोना के समय में बीमारी को, तो हम सभी उनके साथ है विद द स्पिरिट ऑफ यू विल नेवर वॉक अलोन। इन माय माइंड आई एम रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट एवर द रिजल्ट्स आर ऑफ द सीजन। आई जस्ट होप दैट हमारे सारे ही प्लेयर्स एक तरीके से खुश रहे, इंजरी से फ्री रहे, और उन सभी के साथ हम पूरे एनर्जी के साथ हम उनके साथ है, ऐसा हम यहाँ ये फोरम से बताना चाहेंगे। So on that note, let us start the queries. Yeah, so can I read out the queries, Ashutosh? Yeah, yes. Okay, sure. So the first question is from myself because I was confused whether I should be using triple captain or not, and if I should, who should be the one? I would say this is not the ideal week for triple captain. Okay. So, reason being that the opponent fixtures are not favorable. For example, if you take Liverpool, so Sheffield and Chelsea, not the ideal fixture to have triple captain. If you pick Kane, now Spurs itself is not in that good form, and they have Burnley and Fulham, which both the teams have picked up from recently. Okay. So that would be Kane and Salah, the main triple captaincy contenders. If you see City has easy fixtures, but the only concern is that Gundogan might be rotated this week. Yes. Because as far as I know, he played full 90 last week, and he played full 90 in the Champions League as well. So what if you are really bold and go for Ruben Diaz as triple captain? Would that work? No, I think I would wait for a good fixture and a favorable fixture for Liverpool where I can triple captain Salah. Okay, I think if you want to select, if you want to select one of the chips, I guess free hit is a good option to get all 11 players who play double matches this week. I'm assuming that most people would have used free hit chip in the game week 18 or game week 19. Yes, I did. Yes. So even I did. So the only remaining options would be either triple captain or bench boost. Okay. And wildcard, you have remaining the wildcard. I'm going to use wildcard this week. Makes sense. Okay. Because for bench boost, I need 15 playing players, and I don't have 15 playing players. Okay. If you think you can accommodate 15 players by doing a -8, I would say until -8, if you can do 15 players, then you should go for bench boost. But even after -8, you are falling short for 15 good players, then avoid bench boost. Although it is the biggest game week of the FPL. Yes. Even in past, there hasn't been this many fixtures in the double weeks. Yeah. So it is one of the biggest game weeks of the FPL history. But the only thing is that there aren't favorable fixtures. So I would say either use a wild card and have a proper playing 11, or if you can manage -8 and have a good 15 players team, then you should go for bench boost. Okay. Triple captain, I am not in favor of triple captain for this week simply because of the less favorable fixtures. Okay. So my advice would be either bench boost or triple captain. Bench boost or wild card. Free hit. And if you have free hit remain, then use the free. Yeah. But I guess अगर free hit हो तो free hit use करो ना. Why do you want to use wild card?
if you have both the options. नहीं, free hit का एक और concern है कि free hit game week 29 would have only 4 fixtures. Okay. So आप save करके free hit save करके if you want to use in game week 29, Okay. that is also an option. Makes sense. So just to summarize, your first option. Yeah, Ashutosh. Am I audible? No, not really. Not really, you are disturbance आ रहा है, disturbance. हाँ, wind का disturbance आ रहा है. मैं कह रहा हूँ कि मेरा जस्ट यही सुझाव है कि अगर ट्रिपल कैप्टन आपको करना है ना, तो डबल गेम वीक का राह देखने का जरूरत नहीं है. लेट्स से कि किसी ने पिछले या उसके पहले वाले गेम वीक में अगर गुंडोगन को ट्रिपल कैप्टन किया होता तो 57 पॉइंट उसको मिल गए होते. और मैंने तभी शायद बैमफोर्ड को किया था और उसने मतलब कैप्टन ही था वो. 2 फिक्सर के उसके कुल मिला के कुछ 6 या 7 पॉइंट थे और 6 दूनी 12 या 14 पॉइंट मिले थे. तो अगर ट्रिपल कैप्टन किया होता तो भी उसका मेरे को 18 पॉइंट ही मिलता. ठीक है. तो आई बिलीव डबल गेम वीक में ट्रिपल कैप्टन यूज करने के बजाय ये कर सकते हो कि कोई प्लेयर अच्छे से फॉर्म में है और सामने तेरे को ओपोजिशन आ गया है, तब गो फॉर द ट्रिपल कैप्टन. I think your option is I think I would agree with your opinion. Yeah. मतलब अगर favorable fixture है तो you can do in single week. The only thing is कि लोग डबल फिक्सचर में क्यों करना पसंद करते हैं, बिकॉज अगर एक फिक्सचर में फेल जाता है तो यू गेट सेकंड चांस टू मेक सेंस. यस, मतलब कवर अप. तो इन शॉर्ट क्या है कि 2 पॉइंट तो पहले फिक्सचर के मिलेंगे, अगर दूसरे में भी मार मतलब if out of 2 fixture 1 fixture is favorable, he can earn good amount. तो मतलब लोग का प्रेफरेंस डबल फिक्सचर में करने का रीजन वो होता है. बट अगर मुझे केन का इस वीक पूछो डबल फिक्सचर तो आई वोंट डू ट्रिपल कैप्टन. मतलब दोनों फेवरेबल फिक्सचर्स नहीं, या तो फिर आशुतोष ने जैसा बोला कि वेट फॉर 1 गुड फिक्सचर और उसमें डायरेक्टली ट्रिपल कैप्टन कर दो. या ओके. So just to sum up this question, I guess the first priority you are giving is to bench boosting, even though you have to take a -8 for a 15-man squad. The Bench second boost is second is your wild card. Yeah, and third is free hit if you have it, but you preferably want to save it for game week 29. Yes. All right, so that's so that we wrap up the first question. We have the second question here sent by Farooq. He is asking whether we should get back Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne depends on what you have. If you have 2 City defenders and Gundogan, then you should not do it. Okay. But if you have 1 City defender and Gundogan, you should do it. And what about replacing Sterling with De Bruyne? Is that a feasible option? मतलब उसमें ऐसा है कि you don't need to waste transfer specifically for De Bruyne. Okay. It can be done in a spare transfer, but if you already have, let's say for example, if you already have Sterling, Gundogan and Ruben Dias, so I won't say take KDB. Okay. But if you, let's say for example my situation, I have Ruben Dias and Gundogan, right, and I am wildcarding, so I am considering having Kevin De Bruyne. Okay. In summary, you should have 3 City players, either 2 defenders or Gundogan, or you should have 1 defender and 2 midfields. Gundogan is a must-have, and in addition, either you can go for 2 defenders or Kevin De Bruyne and Gundogan and Adi. See, I guess this sentence we have used for quite a lot of episodes now. Having 3 City defender, 3 City players, 2 defenders, 1 midfielder, or 1 defender, 2 midfielders. So I guess that remains true for going forward as well, unless City को अचानक form का कुछ issue आ गया है. That is another thing. Thing is, Gundogan is 6 million. He is very cheap. अब उसका differential नहीं होता. You have to have 6 million में कोई player नड़ेगा नहीं. तो if you are thinking कि मैं Gundogan का return कहीं से cover कर लूँगा, तो that won't happen. Because वो 6 million का है, and 6 million में उसके जितना return कोई नहीं देगा. True. So there is no differential for Gundogan. There is differential for Kevin De Bruyne or Ruben Dias or
Sterling. True. Yes. Because Sterling नहीं है तो Bruno Fernandes है, Ruben Diaz नहीं है तो John Stones है. So there is always replacement for these kind of players. But 6 million में जो इतना आउट परफॉर्मिंग कर रहा हाँ, है वही. उसके लिए कोई The closest you need to have. the closest something can get to Gundogan is Souček, but even he is not like scoring goals in every game or game. So He's not as consistent. He's not as bankable as Gundogan. yeah, exactly my point. Yes. Gundogan का क्या है? He is having free role and he is most often in the box only. तो मतलब वो स्ट्राइकर और मिडफील्डर और नाम का है. He is playing as a false nine, I would say. So he's there in the box to finish the tap-ins. So Gundogan is a must-have. Makes sense. And अभी क्या है? He is allowed to move forward. Before like prior to them having Aguero, Sane, Sterling, Gundogan used to be that defender who always used to sit back with either Fernandinho or Rodri. Now he's been given that license to move forward, and FPL players all around the world are getting the benefit of him. So I guess we should move on to the next question. But before we do, just a one sentence sum up of this question is: don't waste your transfer on Kevin De Bruyne. But if you have a spare transfer remaining, then you might want to think about going for him, or just like in Meet's case, if you're taking a wild card or a free hit, then he's always an option. So here is question number 3. Is from Krishna. He is asking, with 4 Man City home fixtures coming back to back, would it be silly to take Aguero, or should we keep Aguero away from our fantasy teams? Keep Aguero away. That's an easy answer. Why? Because he hasn't played this season, and I think he has only one start. Yeah. So I would not. I request Meet to be. I request Meet to be as snarky as he was when this question was asked in the group. तो बड़ा ऐसा sarcasm के साथ जवाब दिया था. वो क्या था वो जवाब? भाई versus भाई. So basically the thing was कि Dark Knight में ऐसा सीन है कि when this employee comes to know that Bruce Wayne is working as Batman and Morgan Freeman is embezzling the money to fund him. तो Morgan Freeman अपनी style में पूछता है, let me try and understand this. So basically you want to bring in Aguero for 1 week, who hasn't played a whole season, and he has only one start. So he pauses and says, good luck. So if you have seen that Morgan Freeman conversation, you would know. Yeah. So I think Aguero is a no. There is no doubt on quality, but he is not. He has not played this season, so I would not take risk. It's funny how City it's funny. I think वो दिन चले गए जहाँ पे Aguero एक कहते हैं ना very hottest property रहता था. मैं वही बोलने जा रहा था कि it's funny how the City don't need their it's funny how City don't need their record goal scorer anymore. उनको बिना striker के भी चल जाता है. Actually मैं उसमें क्या है मतलब सारी टीम और उनके मैनेजमेंट इतने निकम्मे नहीं होते कि उनके फ्रंट 3 को कहते हैं ना कंप्लेसेंट हो जाए वैसा रिप्लेसमेंट के बिना वो लोग सीजन आफ्टर सीजन खिलाए. So well done to City and their management. Yeah. So me, just to sum up this question, I have just one thought in my mind. Should we keep Aguero away from our team for the rest of the season? We don't need him anymore, right? No, not that way. He needs a run of games. Okay. To pick form. So once Aguero is in form and he's clicking, you would see when Aguero plays, he starts taking shots, and he's involved. बट चीज ये है कि सिटी के टीम में लेने लायक प्लेयर्स में डिफेंडर में 2 लोग हैं जिसको लिए जा सकते हैं,
KDB, स्टर्लिंग, गुंडोगन आर ऑलवेज somebody you can pick. तो वो 5 बंदों के बाद, और कई लोग एडरसन को भी लेके बैठते हैं, तो 5 बंदों के बाद छठा एग्वेरो मतलब आता है। तो और एग्वेरो अच्छा खासा महंगा भी है। सो आई मीन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आई मीन नेवर से नेवर, बट सो आई ऑब्वियसली नॉट से नेवर टू एग्वेरो, बट चांसेस आर वेरी स्लिम अगर रेस्ट ऑफ द सीजन की बात करें, क्योंकि ये जो मीत ने कहा है ना कि एग्वेरो अच्छा खेलेगा तो शॉट्स लेना चालू करेगा, वो दिख जाएगा दूर से, वो उसने जब हमने 5वें गेम वीक में टेम्पलेट टीम वाला पॉडकास्ट किया था ना 1 घंटे वाला, तब उसने बोला था। और अभी हम 25वें गेम वीक में हैं, अभी भी वो आई मीन एक 26वें गेम वीक में, तो एक या दूसरे रीजन से वो चीज वो मौका नहीं आया है, वो शायद इंजरी में रहा है या जो भी रीजन रहे हो, आई डोंट फॉलो सिटी, बट वो शायद हम 26 गेम वीक में भी वही बात कर रहे हैं। आई गेस Aguero nahi hai, my Aguero, like out of 26 game weeks, I assume Aguero hasn't been a part of like 18 or 19 game weeks, even more. It has actually made the life of FPL players a bit tricky, because अभी क्या था, पहले जब Aguero fit था तो Kane Aguero में ही डाउट होया करता था। अभी he is not there, so the doubts have increased. Ollie Watkins, Bamford, Wilson, Calvert-Lewin, so the confusion has increased, but फिर वो focus अभी एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर में लिया जा रहा है। अगर अग्वेरो फिट होता तो यू वुडंट हैव अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ सॉन, साला, ब्रूनो फर्नांडिस, कोई एक तो मिस कर रहा होता, बिकॉज वो पैसे फिर उसमें जाता है। बट दिस इज एवरी सीजन, कोई ना कोई हर एक सीजन कोई ना कोई अलग ही समीकरण रहता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो just a one word answer, stay away from Aguero for the short term. So we have 2 questions from Raghav now. One is based on Leicester City and one is based on Aston Villa. The first question is Aston Villa based. मेरे को ऐसा लग रहा है, I mean before we go to the question, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक आध बार है ना हमको राघव भाई को बुला लेना है, तो मतलब उनके साथ भी पूरा पॉडकास्ट कर लेते हैं, 5-6 सवाल क्वेरी आप राघव भाई पूछ लो हमको, तो क्या है कि आपको बिठा के सामने सामने बात करवा लेते हैं। Just to very thankful, very regularly उनके साथ से क्वेरी आती है and we are very grateful to राघव भाई। Yeah, so just to रेगुलर व्यूअर है हमारा। हाँ वही, और रेगुलर कमेंटर भी है ट्विटर पे। And just to tell Raghav and all the other guys who have asked questions this week, वो नीचे timeline रहेगी, तो अगर आपको सिर्फ अपने question के बारे में ही सुनना है तो just press the time from where your question begins. The first question from Raghav is, which is the best defending option from Aston Villa? See, if you have Martinez, you don't need any other. Okay. मैं मार्टिनेज को मार्टिनेज नहीं बोलता, मैं उसको स्मार्टिनेज बोलता हूँ। तो so if you have defender, then if you have Martinez, I mean if you have Smarty, then you don't need any other defender. If you still want to have differential apart from Martinez, then I think this left back. Matt Target. Yeah, I have Matt Target. That's why. Yeah. It's the only consistent, reliable option. Yeah, exactly. I would say have Martinez. So like अगर Martinez हो, let's assume the guy has Martinez, okay me. जेम्स जस्टिन हुआ करता था, पर उसके जगह पे वो मैट टारगेट ले सकता है क्या? Aston Villa double up, I won't suggest. Okay, that's maybe if you have Grealish and Martinez, that would still make sense, right? Okay. उनके टीम में मार्टिनेज तो है, मेरे को मार्टिनेज तो दिख रहा है उनकी टीम में। Okay. तो I think Aston Villa double up नहीं करना चाहिए। उनको बोलो कि अगर ग्रीलिश की जगह है तो ग्रीलिश ले सकते हैं वो। आगे आ रहा है क्वेश्चन कि which are the best defenders to have, उसमें we will discuss what should be the backline. Oh, okay, makes sense. Cool. Second question from Raghav is with Maddison out, will Leicester's attacking returns make drastically fall, because he's thinking about captaining Harvey Barnes this week? उसका मैं सिंपल कहूँगा कि यस बहुत ज़्यादा पड़ेगा। Okay. Because अभी यूरोपा में बाहर हो गई लेस्टर। हाँ, स्लाविया प्राग के सामने। Yep. और वहाँ पे वार्डी और बार्न्स थे। उसमें ऐसा है कि मेडिसन enables
Vardy and Barnes. So Madison was heavily involved in the last 5 to 6 weeks in as Leicester was performing well. अब क्या है कि वार्डी का ऐसा है कि वो वीक में 3 दिन में 2 बार नहीं खेल सकता, वो इंजर्ड हो जाता है. इट हैज हैपेंड 3 times. Yeah. तो 2 वीक ये डबल फिक्सचर में 2 वीक में वार्डी एक वीक खेलेगा नहीं. दूसरा Yeah. कि मेडिसन इंजर्ड है. तो और हार्वी बार्न्स का कैसा है, ही इज अ गोल स्कोरर, उसका असिस्ट नहीं आता बट ही स्कोर्स गोल्स. और Okay. लेस्टर के फिक्सचर्स देख के आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक एनी लेस्टर प्लेयर्स. हार्वी बार्न्स अगर लेना है तो हार्वी बार्न्स लेके डोंट कैप्टन हिम. आई थिंक कैप्टन मटेरियल शुड बी केन दिस वीक because Kane nahi or Salah. I would either go with Kane or either go with Salah. So Okay. Yeah. So So the I- thing I is, the thing is, Barnes and Madison वो क्या they come in a pair. अगर Yes, एक yes. परफॉर्म करेगा तो दूसरा परफॉर्म करेगा, दूसरा परफॉर्म करेगा तो पहला परफॉर्म करेगा. So it's like you are losing one half of yourself from your body. Like mind है तो heart नहीं है, वैसी बात है ये. मेडिसन का कैसा है, वो सेट पीस भी लेता था और हाँ. कॉर्नर्स भी लेता था. तो मेडिसन वाज अ परफेक्ट ऑप्शन टू हैव इन दिस डबल गेमिंग, बट वो नहीं है. तो आई वुड से अवॉइड लेस्टर प्लेयर्स, बट अगर लेना है तो हार्वी बार्न्स ले सकते हो बट डोंट कैप्टन. Okay. So let's sum up Raghav's both of the questions asked by Raghav. Best defender from Villa. Apparently, he doesn't need one because he has Emi Martinez in his squad. But for all the other viewers who don't have Emi Martinez, your first option and your only option should be Matt Target. Yes. Madison and Leicester. Target. बस और क्या बोल सकता हूँ मैं इसके बारे में. And just to sum up the second question from Raghav, yes, the form of the attacking form of Leicester would be affected due to the loss of Madison because he is also their prime set piece taker, and Harvey Barnes is not the same player he is without Madison. So I suggest you don't captain Barnes. There are much better options than him. This is the fifth question. Again, it's based on Gundogan. I think we have discussed this before in our previous question. It was suggest good defenders and should he stick with Gundogan? No, Gundogan तो we already discussed. Yeah, must have. Case closed. There is chance that he might not play both the fixtures this week, but he should be there. All right. But suggest good defenders. I would say if you my ideal pairing would be Martinez, then Luka Dean. Okay. Because Everton has very good fixtures. Both them 2 fixtures this week. Yes. Ruben Dias, and the third guy would be either Dyer or I would say Eric Dyer, and I would have on the bench Dallas for future game weeks. If not, I would have Nathaniel Phillips as the fourth option, and fifth would be bench guy, so I won't be playing. All right. So my if you are running short on budget, then maybe Ben Godfrey, Eric Dyer, and this Stuart Dallas. Ruben Dias. Stuart Dallas does not have double fixture, so. Oh yes, he had that last week, and it gave me like 17 points, which is a good return. Other with double fixture are Chelsea and United and all. So if you want to go for differential, you can go for Luke Shaw, but I think Spurs have better chance of keeping clean sheet. Yeah, true. Eric Dyer, I guess, is a good option from Spurs. Yes. So, but anyone who should pick any Liverpool defenders like Trent or Robertson? No, I don't think so. अगर लेना है तो नेथानियल फिलिप्स या कबाक ले लो, सस्ता पड़ेगा. Okay. कबाक कितने का है? 5 मिलियन. 5 मिलियन. बट उससे अच्छा नेथानियल फिलिप्स ले लो. हेंडरसन भी इंजर्ड है और फैबिन्हो खेलने नहीं वाला. तो आई थिंक इट वुड बी नेथानियल फिलिप्स, और नेथानियल फिलिप्स अच्छा ही खेल रहा है. सो आई थिंक
अगर बैकअप रखना है तो 4 मिलियन का नेटल फिलिप्स यू कैन हैव. And oh, sorry. Just to sum up, can you just name the priority list of your defenders, Meet? So my ideal three would be Luka Dean, Ruben Yes. Diaz, and Eric Dyer. Okay. अगर सिटी डबल अप डिफेंस करना है तो आई वुड पिक जॉन स्टोन्स. एक्चुअली आई शुड पिक कांसेलो, बट कांसेलो लास्ट वीक भी खेला और चैंपियंस लीग भी खेला है, तो जॉन स्टोन्स नहीं खेला था चैंपियंस लीग, तो आई एम एज्यूमिंग कि जॉन स्टोन्स दोनों फिक्चर्स खेलेगा. Okay. सो if you are doing city double up in defense, I would go with 4 defenders. अगर आप city double up defense नहीं कर रहे हो तो I would say Eric Dyer, Okay. Ruben Diaz, and Luka Dean, and keeper as Martinez. Another option is you go for Loris as keeper and have Matt Target as defender instead of Eric Dyer. Okay. So I guess those are our questions from this week. Any final thoughts, Ashutosh, Meet, before we wrap up? Yes, I think 2 things you should consider. That if you don't have used wildcard, you should use wildcard this week and have the best team this week. Yeah. तो bench boost -8 करके कर सकते हो. Yeah, I'll probably use the wildcard as well. Yes. So this is biggest game week, so you should use that. Another thing is don't when you are using the wildcard or any chips, have a look at the next 2 or 3 fixtures as well. Don't just focus on the 2 weeks. So that would be the 2 things I would say. Okay. Anything, Ashutosh, you want to add? मेरा बस बहुत ही पेडेस्ट्रियन टेक है लास्ट वाला कि मेरी जो दूसरी टीम है जिसको मैं ब्राउजर से सेव करता हूँ, उसमें मैंने पिछले 2 वीक पहले गुंडोगन को कैप्टन बनाना रह गया था और उसने 19 पॉइंट लाया. तो इस बार मैं डबल ट्रिपल चेक करूंगा कि मैंने मेरी टीम सेव कर दी है और मैं एट द गेम वीक ऐसा बेवकूफ ना दिखूं. और बस वही मेरा टेक है. I guess, और मैं सारे फैंस को भी कहना चाहूंगा कि मतलब 5-6 घंटे पहले ही टीम बना लो. 3-4 बार बाद में भले ही उसको देखते रहना, मगर ऐसा लास्ट मोमेंट तक कुछ भी मत रखो. Don't procrastinate when it comes to FPL or your life. वो तो वीडियो का टाइटल हो गया है. काफी philosophical हो गया है. So my final thoughts would be this is like one of the most important, if not the most important FPL game weeks in a long time. So this can probably make or break your season, help you beat one of those annoying friend if you have any. हमारे में तो ऐसे हम नहीं रखते ऐसे, but you know this can be one where you can get one over your friend or help you climb up the table. So make sure you watch this episode, take some advice from our Instagram, also from our Twitter. हमको personally भी पूछो, हमारे personal Twitter handles और FP अहमदाबाद LFC अहमदाबाद का भी ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन. एंड या दैट्स इट फ्रॉम आवर गाइस. सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Just want to add one thing. Oh yeah, sure, go ahead. Captain picks हर बार मैं भूल जाता हूँ. So if you are asking, if you are concerned about captain picks, my choice is going to be 99% would be Kane. Okay. And if not Kane, it would be De Bruyne because De Bruyne was rested in Champions League. All right. So I am thinking he might play both weeks. So और कुछ नहीं सोचता कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो साला तो है. Sounds about perfect. सही है. So I guess that's finally it. Again, just a reminder to like this video and subscribe to our channel. Also give us a follow on Twitter. We are always available there. So see you guys next week. Bye bye. Bye bye everyone.